প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই জগতৰ উৎকৃষ্টকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনলৈ আহিছে? आज कौन कौन ये जगत का रोगिस्तरी प्रार्थना भवन में आया है? আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, आप सब एक ये याद रखना कि এই প্ৰাৰ্থনা ভৱন কোনো ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা অনুষ্ঠান নহয়। ये प्रार्थना भवन में कोई धर्म प्रसार अनुष्ठान नहीं है। সেয়েহে ইয়াত জাতি ভাষা সকলো ধৰ্মৰ নিৰ্বিশেষে আমি একেলগতে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। इसलिए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। সেয়ে প্ৰথম কথাটো হ'ল, ইয়াত আহিলে এটাই কথা মনত ৰাখিব, पहली बात यह है कि यहाँ पर आने से आप एक चीज़ याद रखना कि তো মই একো কৰি দিব নোৱাৰোঁ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। মই কোনো ডক্টৰো নহয়, বেজো নহয়। मैं कुछ डॉक्टर भी नहीं हूँ, बेज भी नहीं हूँ। মই যেনেকৈ প্ৰভু যীশুক আজি দৰ্শন পাইছিলোঁ, मैं जैसे प्रभु यीशु का दर्शन पाया हूँ, সেয়েহে প্ৰিয়সকল আজি 22 বছৰ হ'ল वही 22 बছৰ हुआ है। তো ইয়াত ঈশ্বৰে কেনেকৈ কাম কৰে সেয়ে মই নিজেও নাজানো। यहाँ पर ईश्वर कैसे काम करते हैं ये मुझे नहीं पता है। কোনোবা দিনাখন হয়তো নাচি দিলে সুস্থ হয়, किसी दिन नाचने से भी अच्छे हो सकते हो, কোনোবা দিনাখন গামোচাখন দিলেও সুস্থ হয়, किसी दिन गामूसा देने से भी ठीक हो सकते हो, কোনোবা দিনাখন গেটতে সুস্থ হয়, किसी दिन गेट में ही ठीक हो सकते हो, কোনোবা দিনাখন ইয়াত আমলখি খায়ো সুস্থ হয়, किसी दिन यहाँ पर आमलकी खा के भी ठीक हो सकते हो, কোনোবা দিনাখন ইয়াত কাম কৰি দিলে সুস্থ হয়, किसी दिन यहाँ पर आके काम करने से भी ठीक हो सकते हो, কোনোবা ৰোগী ঘৰতে আলে আহি মেলি কওঁতে সুস্থ হয়। कोई घर पे रह के भी ठीक हो सकता है। হে প্ৰিয়সকল, ইয়াত আজি 22 বছৰ দিনে যি হৈ আছে, वही यहाँ पर जो 22 वर्ष से हो रहा है, এয়া মই আজিলৈকে একো বুজি নাপাওঁ। वही मुझे खुद को ही पता नहीं लगा है। হে প্ৰিয়সকল, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কোনোবা মানুহে অলপ মোক খং উঠুৱাই দিয়ে, कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है, সেই ব্যক্তিজনক গালি পাৰিলেও সুস্থ হয়। उसको मैं डांटने से भी वो ठीक हो जाता है। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। Praise the Lord। হে প্ৰিয়সকল, আজি এই জগতৰ উৎকৃষ্টকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱন মই নিজৰ পৰা হোৱা নাই বা মই নিজে এইবিলাক কৰ্ম কৰা নাই। ये जो जगत उच्चस्तरीय प्रार्थना भवन ये मेरे करने से नहीं हुआ है, এয়া সকলো প্ৰভু যীশুৱে কৈ আছে। ये प्रभु यीशु का ही दिया हुआ है। এই কাৰণতে ইয়ালৈ আহিলে এটা কথা মনত ৰাখিব, इसलिए यहाँ पर आने से एक चीज़ याद रखना, 1 নম্বৰ হৈছে আমি কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ যে পাপ নাই কৰা আৰু নকৰোঁ বুলি। पहला ये कि हम नहीं बोल सकते कि हमने पाप नहीं किया और पाप होगा नहीं हमसे। এই কাৰণতে বাইবেলত এজন ৰজা আছিলে, वही बाइबल में एक राजा था, তেওঁৰ নাম আছিলে দাৱীদ ৰজা। उसका नाम दाऊद राजा था। এদিন সেই ৰজাই চৰ্তৰ ওপৰত ঘূৰি ফুৰোঁতে वही राजा छत के ऊपर घूमते फिरने के टाइम এগৰাকী মহিলাই গা ধোৱা দেখিলে। एक महिला को नहाते हुए देखा। সেই মহিলাগৰাকী দেখিবলৈ সুন্দৰ আছিলে, वो दिखने में बहुत सुंदर थी। এই কাৰণতে ৰজাই তাক মাতি আনি তাইৰ লগত শয়ন কৰিলে। इसलिए राजा उसको बुला के लेकर आया। তাৰপিছতে তাই গৰ্ভৱতী হ'ল। उसके बाद वो गर्भवती हो गई। তেতিয়া তাই আহি ক'লে যে মহাৰাজ মই গৰ্ভৱতী হ'লোঁ। फिर वो आके बोला कि महाराज मैं गर्भवती हो गई हूँ। তেতিয়া ৰজাই কি কৰিলে, तब राजा ने क्या किया, তেওঁৰ স্বামীক টান যুদ্ধত আগত দি মৰুৱাই পেলালে। तब उसको युद्धों में आगे रख के मार डाला। তেতিয়া সেই ৰজাৰ যেতিয়া নেকি পাপ হ'ল, तब राजा से पाप हो गया। সেই ৰজাই শুব নোৱাৰে, খাব নোৱাৰে,
तब वो सो नहीं पाया, खा भी नहीं पाया, এতিয়া আমন জীৱন কৰি বহি থাকে। इसलिए वो ऐसे ही बैठा रहा। কিন্তু ঈশ্বৰে সেই ৰজাজনক ভাল পায়। पर ईश्वर वो राजा को अच्छा पाता है। এই কাৰণতে তেওঁ কি কৰিলে, এজন ভাৱবাদীক তেওঁৰ ওচৰলৈ পঠাই দিলে। इसलिए एक भागवादी को उसके पास भेज दिया। আৰু সেই ভাৱবাদীজনে গৈ वही भागवादी उसके पास जाके ৰজাক এটা কাহিনী ক'লে राजा को एक कहानी बोला। যে এজন ধনী মানুহ আছিলে एक अमीर आदमी था আৰু এজন দুখীয়া মানুহ আছিলে। और एक गरीब आदमी था। সেই ধনী মানুহজনৰ ঘৰত গৰু ছাগলী জীৱ জন্তু উপচি পৰি মানে বহুত আছিলে, বহুত ধনী মানুহ আছিলে। उसके पास गाय भैंस और बकरी सब कुछ था। কিন্তু দুখীয়া মানুহজনৰ এটা ছাগলী বহুত মৰমত তেওঁলোকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে। और जो गरीब आदमी था उसके पास एक बकरी था और उसी को प्यार से उस बकरी को बहुत बड़ा किया। ল'ৰাবিলাকে লগতে খায়, লগতে শুৱে, বহুত মৰম কৰিছিলে। और जो लड़का है वो भी साथ में रहते थे और उनको बहुत प्यार किया। কিন্তু সেই ধনী মানুহৰ ঘৰলৈ যেতিয়া এজন আলহী আহিলে पर जब अमीर आदमी के घर एक मेहमान आया তেতিয়া কি কৰিলে, তেওঁ দুটকামান পইচা তেওঁ সেই দুখীয়া মানুহজনে দিবলৈ আছিলে। तब 2 रुपए उसको देने के लिए था। তো সেই ছাগলীটো ধাৰত মাৰি আনি আলহীজনক খোৱালে। तब सागुली बकरी को धार में लेके आके उस आदमी को खिलाया। এতিয়া সেই ঘৰখনৰ ল'ৰা ছোৱালী মাক বাপেকে বহুত ক্ৰন্দন কৰিলে, কাৰণ এটাই ছাগলী আছিলে তেওঁলোকৰ। तब उनके घर पे रहने वाले लोग ने बहुत खंडन किया और क्योंकि उनके घर में एक ही बकरी था। তেতিয়া সেই ৰজাই কি কৈছে तब वो राजा ने क्या बोला যে সেই মানুহটোক মৰাকে মাৰি পেলাব লাগিছিলে, कि उस मनुष्य को মৰাকে मारने से ही मार देना चाहिए था। কিয়নো তেওঁ ইমান ধন সম্পত্তি থাকোঁতেও এই দুখীয়া মানুহজনৰ ছাগলী আনি কিনে আলহীক খোৱালে। उसके पास इतना पैसा और धन होने के कारण के बाद भी वो गरीब आदमी से बकरी लेकर आके खिलाया। তেতিয়া নাথন ভাগৱতী কি ক'লে तब भागवादी ने क्या बोला, যে মহাৰাজ সেই মানুহজন আপুনি হয়, बोला कि महाराज वो आदमी आप ही हो। আপোনাৰ ইমান পত্নী থাকোঁতেও আপুনি সেই দুখীয়া মানুহগৰাকীক আনি আপোনাৰ পত্নী বনাই ল'লে। आपके पास इतने पत्नी होने के बाद भी आप वो गरीब आदमी का पत्नी लेके आके अपना पति बना दिया আৰু তেওঁ মানুহজনকো মাৰি পেলালে। और उसके आदमी को भी मार दिया। এইকাৰণতে আপোনাৰ পাপ হ'ল। इसलिए आपका पाप हो गया। তেতিয়া কৈছে যে ৰজাই মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব। तब बोला कि अब मैं क्या करूं राजा। এতিয়া নাথন ভাগৱতীয়ে ক'লে আপুনি লঘোণ দি ক্ৰন্দন কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। तब भागवादी ने बोला आप व्रत करो और प्रार्थना करो। তেতিয়া সেই ৰজাই যেতিয়া লঘোণ দিলে, পাপ স্বীকাৰ কৰিলে, तब राजा ने जब व्रत किया और पाप स्वीकार किया अपना, তেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁক ক্ষমা কৰি দিলে। तब ईश्वर ने उसे माफ कर दिया। এই কাৰণতে ইয়াত আহিলে মানে এটাই কথা জানিব যে আমি সৰুৰ পৰা কিমান পাপ কৰিছোঁ কোনো হিচাপ দিব নোৱাৰি। इसलिए यहाँ आने से एक चीज याद रखना कि आप छोटे से कितना पाप कर रहे हो, आपका ये हिसाब कोई नहीं दे सकता। সেয়েহে প্ৰথমতে আমি পাপনো কি वही पाप तो क्या है এইটো বিষয়ে জনা নাছিলোঁ। ये हम जान नहीं सके थे पहले। এই কাৰণতে মঠি লিখা আছে, इसलिए मोटी लिखा है যে তুমি তিৰোতা মানুহলে কাম ভাৱে নাচাবা। तुम तिरुता मानो के सामने मत देखना। যোনে তিৰোতা মানুহলে কাম ভাৱে চায় जो तिरुता मानो के काम के लिए देखता है সি তেতিয়াই তাইৰ লগত ব্যভিচাৰ কৰিব।
तब वो उसके साथ व्यभिचार करेगा। এইকাৰণতে তোমাৰ চকুৱে যদি পাপ কৰিছে তাক উলিয়াই পেলোৱা। जब तुम्हारा आँख पाप किया है तो उसको भी निकाल फेंकेगा। আপোনাৰ হাতখনে যদি পাপ কৰিছে তাক কাটি পেলোৱা। अगर आपका हाथ ने पाप किया है तो उसको काट फेंकेगा, নহ'লে গোটেই শৰীৰটো নৰকলৈ যাব। नहीं तो पूरा शरीर नरक में जाएगा। এইকাৰণতে আমি চকুটো বা হাতখন কেনেকৈ কাটিম? इसलिए हम आँख और हाथ कैसे काटेंगे? সেয়েহে প্ৰিয়সকল, আজি দায়ী ৰজাই পাপ কেনেকৈ স্বীকাৰ কৰিব লাগে সেই কথাটো গীতমালা 32 অধ্যায়ত লিখি থৈ গৈছে। वही राजा दायूद ने बोला है कि हमें अपना पाप कैसे स्वीकार करना है, वो गीतमाला 32 अध्याय में लिख के गया है। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বাইবেলবিলাক উলিয়াই ল'ব। যাৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা হয়, क्या ही ध्यान है वह जिसका अपराध क्षमा किया जाए, যাৰ পাপ ঢকা হয় और जिसका पाप दगा गया हो, সেইজনে ধন্য। क्या ही धन्य है যি মানুহৰ দুখ জিহুৱাই নিলিখে, वह मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, আৰু যাৰ মনত প্ৰবঞ্চনা নাই, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। সেইজনে ধন্য। जब मैं चुप रहा, মই যেতিয়া পাপ স্বীকাৰ নকৰি মনে মনে আছিলোঁ, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी তেতিয়া ওৰে দিনটো কেঁকাই থকাত মোৰ অস্থিবোৰ ক্ষয় পাইছিল। मेरी हड्डियां पिघल गई, কিয়নো দিনে ৰাতিয়ে তোমাৰ হাত মোৰ ওপৰত গধুৰ হৈ আছিল। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। মোৰ গাৰ ৰস পৰিৱৰ্তন হৈ ঘামকালিৰ খৰালি যেন হৈছিল। और मेरी तरावट धुक्काल की सी जुड़ाहट बनती गई। মই তোমাৰ আগত মোৰ পাপ ভয় কাঢ়িলোঁ, মোৰ অপৰাধ আৰু লুকুৱাই নাৰাখিলোঁ। মই ক'লোঁ, জিহুৱাৰ আগত মোৰ অপৰাধ ভয় কাঢ়িম, তাতে পাপত পৰা মোৰ দুখ তুমি ক্ষমা কৰিলা। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। এই নিমিত্তে প্ৰতিজন সাধুৱে তোমাক পাব পৰা কালত তোমাৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰক। অৱশ্যে মহা জল পলাৱনেও সেইজনৰ ওচৰ নাপাব। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बाढ़ी बढ़ आए तब भी। हे प्रियসকল, আমি গীতমালা 51 অধ্যায়ত আকৌ দাউদে পাপ কেনেকৈ স্বীকাৰ কৰিব লাগে সেই কথাটো এনেকৈ লিখিছে, হে ঈশ্বৰ, তোমাৰ দয়া অনুসাৰে মোক কৃপা কৰা, তোমাৰ প্ৰচুৰ অনুগ্ৰহৰ দৰে মোৰ পাপ মোচন কৰা। परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करो, আপোনালোকে পাছে পাছে কৈ যাব, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। হে ঈশ্বৰ, তোমাৰ দয়া অনুসাৰে মোক কৃপা কৰা, তোমাৰ প্ৰচুৰ অনুগ্ৰহৰ দৰে মোৰ পাপ মোচন কৰা। মোৰ অধৰ্মৰ পৰা মোক সম্পূৰ্ণকৈ ধুই পেলোৱা, মোৰ পাপৰ পৰা মোক খুচি কৰা। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भक्ति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। কিয়নো মোৰ অপৰাধবোৰ মই নিজে জানিছোঁ, মোৰ পাপ সদায় মোৰ আগতে আছে। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में ही रहता है। তুমি তোমাৰ বাক্য ধাৰ্মিক আৰু তোমাৰ বিচাৰত নিৰ্দোষী হ'ব নিমিত্তে তোমাৰ বিৰুদ্ধে অকল তোমাৰেই বিৰুদ্ধে মই পাপ কৰিলোঁ আৰু তোমাৰ দৃষ্টিত যি ঘিনলগীয়া তাকে কৰিলোঁ। मैंने केवल तेरा ही विरुद्ध पाप
किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोले मैं अधर्मी और न्याय करने में निष्कल ठहरे। চোৱা তুমি আন্তৰিক সত্যতাত সন্তোষ পাওঁতা তুমি মোক অন্তৰত জ্ঞান শিক্ষা দিবা। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। তুমি এচুক বলেৰে মোক পাপৰ পৰা মুক্ত কৰা, তাতে মই সুচী হ'ম। মুখ ধোৱা, তাতে মই হিমতকৈ বগা হ'ম। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो गए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। মোৰ পাপসমূহৰ পৰা তোমাৰ মুখ ঢাকা, মোৰ সকলো অধৰ্ম মোচন কৰা। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। হে ঈশ্বৰ মোক শুদ্ধ মন সৃষ্টি কৰা, মোৰ অন্তৰত সুস্থিৰ আত্মা পুনৰাই জন্মোৱা। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। তোমাৰ সন্মুখৰ পৰা মোক দূৰ নকৰিবা, তোমাৰ পবিত্ৰ আত্মা মোৰ পৰা নিনিবা। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। তোমাৰ পৰিত্ৰাণৰ আনন্দ মোক পুনৰাই দান কৰা আৰু উদাৰ আত্মা দি মোক ধৰি ৰাখা। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। আহক আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পাপবিলাক স্বীকাৰ কৰিম। आओ हम सब मिलकर अपना अपना पाप स्वीकार करते हैं। যেনেকৈ দায়ী ৰজাই পাপ স্বীকাৰ কৰিলে, লঘোণ দিলে, লঘোণ দিয়াৰ পিছতে তেওঁ ঈশ্বৰে ক্ষমা কৰিলে, তেনেকৈ যিসকলে আজি নতুনকৈ আহিছে আপুনি ঘৰতে লঘোণ দিব লাগিব। লঘোণ কেনেকৈ দিব লাগিব সেয়া আমাৰ কিতাপবিলাক আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে দুজনমান ব্যক্তি আছে, মই চিনাকি কৰি দিম। তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকক তেওঁলোকে শিকাই দিব। আহক আমি সকলোৱে থিয় হৈ নিজৰ নিজৰ পাপবিলাক স্বীকাৰ কৰিব। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পাপবিলাক স্বীকাৰ কৰক যে হে প্ৰভু, মই সৰুৰ পৰা আজিলৈকে যিমান পাপ কৰিলোঁ সকলো পাপ ক্ষমা কৰি দিয়া। হে প্ৰভু, মই ব্যভিচাৰ কৰিলোঁ, চুৰ কৰিলোঁ, মিছা কথা ক'লোঁ, পৰহিংসা কৰিলোঁ। আপোনালোকে কি কি কৰিছে সকলোবিলাক ঈশ্বৰৰ আগত স্বীকাৰ কৰক। হেৰে পূজিম প্ৰভু Uma
प्रभु शांति स्वामी कारण भाईजा कारण अपना की समस्या जिबिलाके ड्राग्स बा मद पानी एरिब पोৱা নাই আপোনালোকে নিজে নিজে प्रार्थना কৰক ঈশ্বৰ সকলোকে आशीर्वाद কৰিব আৰু মই হেক प्रार्थना কৰিম আপোনালোকে নিজে নিজে प्रार्थना কৰক आमेन।